Assalamu alaikum, welcome back to Debrief. Today on table I have Heather and Sarmad. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक. So let's start the conversation with yesterday's comments as usual. जी मैं वही लगा रहा हूँ वीडियो. कल हमारी इंटरेस्टिंग थी थोड़ी सी क्योंकि दो नए हमारे पास पैनलिस्ट थे. They're like new team members on Pakistan now. So let's read some of the comments. Once again, I'd like to point out Afira's voice is so soothing. Yeah. I would suggest she Afira should be के the बहुत- host for yeah. Debrief. Petition to let Afira host every debrief. Petition please. You know what? Yes. हम ऑफिस वाले भी यही चाहते हैं. Actually कि हाँ, Afira ज़्यादा से सिर्फ ज़्यादा अफीरा आए. ने यही चाहती हैं. कल अफीरा की बहुत ज़्यादा तारीफें हुई हैं. हर बार होती हैं वैसे तो. अच्छा, अफीरा your voice is so amazing. I really wish you had a podcast of your own. I'd pay to listen to it. Damn. हम सारे उठ जाते हैं फिर असल में. यही पाकिस्तान नाउ. हाँ ठीक है, आप एक Economic crises are solved. Pay gate yes start sending us money. यार वैसे if we have a monetary option यहाँ पे ना तो हम TBT की तरह guest ने पे लेकर आ सकते हैं, like celebrity guest जो कि या relevant guest जो कि Yeah, out of वैसे town the thing is about Debrief is that we are not hoping to bring other people. It's a podcast supposed to be by not an expert. by not an experts and by people who are readily available who can shoot in a day because this is a daily podcast. This is not like TBT or something that's planned. So agree. तो हमारा वो वो टूट जाएगा हमारा. vision की diversions है. That's it. तो पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं. Let's start. I think सबसे पहले तुम्हें एप्पल इवेंट की बात करनी चाहिए. That has been the most trending. सर भाई आपने लाइव देखा कि नहीं देखा? नहीं I don't watch Apple. हालांकि it's extremely being a creative person, it's extremely beautiful and उनका नाम भी था. The event or their product? नहीं the events, all Apple events. Hell product is also beautiful. Let's just put it another way. Event का नाम था California Streaming, which I think is very interesting. Event is Apple की जो मार्केटिंग इवेंट्स होते हैं वो बहुत ही they're extremely well produced, बहुत से ड्रोन शॉट्स वगैरह आपको नजर आएंगे, बहुत it's amazing. The transitions are amazing. However, I don't have time to actually watch this. I rather watch someone else. एक टेक ट्यूबर की वीडियो देख लेता हूँ, उसमें हाईलाइट्स पता चल जाते हैं उसमें और वो एक समरी दे देता है. So that's how I consume most of the tech news. That's great. मैंने कल जब मैंने यूट्यूब लगाया तो वो चल रही थी लाइव स्ट्रीम और उस पर लिखा था 1.8 मिलियन पीपल वॉचिंग एट वन टाइम. इवेंट जब हो रहा था और जब मैंने लगाया तो वो एंडिंग कर रहे थे, मतलब वो उस वक्त यूजली मोस्ट व्यूअर्स ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि काम की चीज़ों ने सारी अनाउंस कर दी थी. और अच्छा, इस बार आपने नोट किया इस बार इन्होंने प्रोडक्ट्स पहले शिप नहीं किए, किसी का एम्बार्गो ड्रॉप नहीं हुआ. यूजली होता है कि जैसे इवेंट स्टार्ट होता है तो एम्बार्गो ड्रॉप होता है, एकदम वीडियोस आना शुरू हो जाती है. इस बार इन्होंने नहीं दिए किसी नहीं. एप्पल क्या कह रहे इतना वो है, क्या नाम है, व्हाट्स द वर्ड, पावर है उनकी. लास्ट ईयर किया था उन्होंने. या बट दे द थिंग इज अगर कोई और कंपनी करती तो बड़ा मसला होता है. एप्पल इज द ओनली कंपनी दैट कैन पुल दिस ऑफ. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो और इनके डिसीजन कभी-कभी बड़े like they would do it last year and then suddenly not do it this year. I don't know why. Even though last year when they did, they got positive reviews because iPhone 12 was a very successful product. They did something new. They launched a mini version last year. They did sensor shift on the Pro Max last year. So last year जो था, I think last year's iPhone was more promising than this one because there were a lot of new things. This year the only new thing that I see is the Pro and Pro Max having ProMotion, which is 120 Hz. 120 Hz screen. This is main thing. दूसरी बात ये है कि जो सेंसर शिफ्ट है वो पहले सिर्फ Pro Max में था, Pro और Pro Max दोनों में आ गया. दूसरा they are saying that this is the biggest camera shift, but I don't think so. नहीं, minor updates हैं. Minor updates and mostly update है. Yeah. वीडियोस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा बेहतर है क्योंकि अब पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट है और मतलब it was always a portrait. अब ये हुआ कि उनका जो टेलीफोटो लेंस था it has been changed. वो Pro 2.5x था पहले, 2.5 था, तो इससे completely new lens. वो usually Apple doesn't change lens, you know that. Apple पता नहीं ये जो इनका 12 मेगापिक्सल वाला मेन सेंसर है, ये पता नहीं कितने साल से लोग यूज कर रहे हैं. iPhone X में भी यही था. तो they usually don't change their camera, so when they do that it means there's something completely new. So I would really like to see अगर मुझे कभी. लेकिन ये कौन सा वाला मॉडल में? Pro Max 13 Pro Max में होगा. टेलीफोटो लेंस इस सिर्फ Pro और Pro Max में. What is telephoto lens? So there are 3 lenses on iPhone. There are 4 iPhones. There's iPhone 13 mini, there's iPhone 13, then there's iPhone 13 Pro and then 13 Pro Max, right? The 13 mini and the normal 13, they do not have a telephoto lens. They have a main camera, which is wide, and then an ultra wide. Okay. तो उनके वो 2 कैमरे होते हैं. Ultra wide is a video one. Ultra wide is not a video one. Ultra wide is the one is the wide जो नहीं हो जाता. आपके फोन में भी है. Basically टेलीफोटो और वाइड कहते हैं कि जूम कैपेबिलिटीज को, ठीक है.
तो जितना वाइड होगा उतना आपका बड़ा फ्रेम होगा, मोर पीपल कैन कम इन, जितना टेलीफोटो होगा उतना जूम इन होगा और उतनी डेप्थ ऑफ फील्ड भी होगी। ठीक है। तो द टू बिगर मॉडल्स, उनमें एक तीसरा कैमरा होता है, अगर आपने नोट किया, वो होता है टेलीफोटो, व्हिच इज गुड फॉर पोर्ट्रेट और जूमिंग एंड दैट, ठीक है। टेलीफोटो लेंस होता है कि इट्स नेचुरली जूम्ड इन लेंस, वो पहले से ही ऑप्टिकल ऑप्टिकली जूम्ड लेंस है, बिकॉज़ नॉर्मली जो फोन जूम इन करते हैं वो डिजिटली करते हैं, तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं जैसे पोर्ट्रेट मोड में भी जूम इन हुआ होता है ना। सो लाइक अगर आपके पास iPhone 12 हो और iPhone 12 Pro हो, तो दैट Pro will take very good portrait photos because it has a dedicated lens to take those portrait photos. जो आपका simple 12 portrait photo लेगा, it will all be digital. तो वो डिजिटल कर रहा होगा, वो फेस डिटेक्ट करके उसको ब्लर कर रहा होगा। अच्छा। तो ये फर्क होता है। This year they have changed the telephoto lens, which is they are saying that's very good, और उसमें नए फीचर है। दूसरा उन्होंने cinematic mode launch किया जिसमें you can shift focus in real time अगर दो बंदे हैं तो यार, but I feel like that's a gimmick. That's a gimmick. I mean, any phone can do that. You have to see how better it is from the I was hoping कि वो बोलेंगे कि ये ऑटोमेटिकली करता है, then it is कि नहीं, क्लिक तो फिर भी करने हैं, तो फिर क्या मेरा फोन भी कर सकते हैं। Exactly. तो cinematic mode is a gimmick. और दूसरा उनके पास ये हुआ है कि now the main camera, the sensor is same but it's a new lens, so it has a 1.5 aperture, so it's better night ज़्यादा light mode. अच्छा, bringing back to the event point of view, you said that 1.8 million people are watching that. Yeah, so I want to address कि Apple के जो events हैं, press releases से ज़्यादा वो entertainment pieces होते हैं on their own. Like if you watch, like go and watch all. अच्छा, ये भी बड़ा सीन होता है कि when Apple के press event होता है तो वो पुरानी वाली videos गायब कर देते हैं। ये भी बड़ा अजीब सा सीन होता है, so that you can't compare between the previous model and new model. But I'm sure internet पे आपको कहीं मिल जाएंगे. If you go and look through all the previous videos, they're all remarkable, like they're extremely entertaining. Like आप देखिए, even if you're not interested in tech or making it, you'd be really amazed by the visuals, which is why it's very smooth and very soothing. It's very nice. So 1.8 million makes 1.8 million also makes sense because Apple is the first $1 trillion company in the world, and Apple, I think in the history of mankind, I think this has to be one of the most innovative business. No, innovative is not a correct word. Let me think of a better word. Innovative is also right though. I wouldn't successful agree. Business. Success, okay, yeah. In terms of pure economics, right? So it is the biggest business of the humanity's history, and the way they've pulled it off, and the way they've, मतलब आप अगर आप इनकी पिछले 30 साल की जर्नी देखो, तो it's the perfect business. अगर चीज में देखा जाए, the way they've done a lot of. और usually ये होते हैं with mobile phones के, the way they've developed the ecosystem, everything, so that no one else has done. No, but that is my reservation. अच्छा, this is my reservation with Apple. I have this love-hate relationship. I have an iPad यहाँ पे, but I'm a PC person. So I have this love-hate relationship with Apple and makes sense जो तुम बोल रहे कि इतना बड़ा business है कि Apple जो है ना, once you get into the Apple products, तो आप you're stuck in their ecosystem. You can't move out. ठीक है? So my iPad doesn't work well with my computer. It doesn't work with my phone. It's such a hassle. अब मैं कभी सोचता हूँ कि मैं जो है ना एक MacBook Pro ले लेता हूँ ताकि वो मेरे iPad पे सही synchronize हो जाए। इसलिए तो business चल रहा है। आप एक चीज लेंगे and you'll be forced to buy other things also. So they're literally forcing the consumers to buy all their products. और सिर्फ अच्छा, Apple का ये सीन है कि उनका ecosystem इतना vast है कि it's not just phones, iPads, computers, watches, like hardware नहीं, software side पे भी है, ठीक है? तो the reason why I got this iPad is because this software called Procreate. It's really good for illustrations. Procreate doesn't exist for PC. Does Apple own Procreate? नहीं, but it's just कि उनकी market share इतनी है for creatives कि वो जो products बनाते हैं ना for creatives, वो ये सोच के बनाते हैं कि creative के पास तो Apple के products होंगे, हम इस market में जाएंगे, ठीक है? पाकिस्तानियों में क्रिएटिव आई डोंट थिंक इतना एप्पल यूज करते हैं, यहाँ पे पीसी के ज़्यादा हुआ है, बट लिटरली आई स्विच टू iPad जस्ट फॉर दैट वन सॉफ्टवेयर. तो या सो आई हैव दिस लव-हेट रिलेशनशिप. मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान में ना इट्स इफ यू लिव इन द स्टेट्स and if you live in, let's say, any of the western countries, यहाँ पे Apple stores हैं. हाँ, जहाँ पर Apple supported as a country, जहाँ आप ही कंपनी Apple में supported, I think it's a very good decision as a creator to go and take the Apple route, because if you are making enough money and then you can afford these products, your life is going to be better, right? लेकिन I think in Pakistan you should never take this route because the ecosystem is not properly evolved in Pakistan compared to Google. Because मैं जो हूँ ना फंस चुका हूँ गूगल के इकोसिस्टम में. आई यूज एवरी गूगल प्रोडक्ट. तो मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, पीसी है, गूगल ड्राइव यूज़ करता हूँ, गूगल वन सब्सक्रिप्शन है,
हर चीज़। मैं कंप्लीटली गूगल मैप यूज़ कर रहा हूँ, मेरा सारा डाटा गूगल फोटोज़ पर है, तो एवरीथिंग मेरा, मैं फंसा हुआ उसमें। लेकिन उसमें ये है कि गूगल फुली सपोर्ट्स पाकिस्तान, सो एवरीथिंग आई वांट, मेरा डेबिट कार्ड भी मेरा लगा हुआ है। नहीं, but it's not just Google supports Pakistan, it also Google is open for third party integrations as well, ठीक है? जैसे मेरा विंडोज कंप्यूटर है, जिस फोन की जॉब ऐप आ गई है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, सो एप्पल वुड नेवर वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वुड नेवर इवन कंसिडर कि माइक्रोसॉफ्ट एग्जिस्ट, जैसे व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट, उनकी ये मेंटालिटी है, एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करने के लिए। और गूगल हैव दे वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट, दे अंडरस्टैंड दैट पीसी इज द बिगेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर मैक एंड सेंड, वो इसको एग्री करते हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा ये है, जैसे मेरा वही पॉइंट है कि जैसे मैं देखता हूँ पाकिस्तान में M1 मैकबुक ले लेते हैं लोग, प्रीमियर इंस्टॉल किया हुआ होता है, भाई आपने M1 मैकबुक लिया तो फाइनल कट यूज़ करो, लेकिन नहीं, वो M1 मैकबुक तो लिया लेकिन दे वर नॉट fully utilizing, just shout out to someone, एक second, shout out to Saud who works here, who has an M1 MacBook and doesn't have a Final Cut. Then why did you buy the M1 MacBook? So let me, for some people, because हम बहुत ही tech nerdy बातें कर रहे हैं, for viewers watching it at home and for mom as well. So जो सॉफ्टवेयर्स आपके डेडिकेटेडली Mac OS या iPad के लिए बनते हैं, वो ऑप्टिमाइज होते हैं बहुत, जैसे इसमें 6 GB रैम है मेरे, बल्कि 3 GB रैम आई थिंक, लेकिन वो इतना अच्छा चलता है क्योंकि इट्स ऑप्टिमाइज फॉर दिस iPad स्पेसिफिकली. सो इफ़ यू हैव अ मैक कंप्यूटर देन डेफिनेटली गो फॉर फाइनल कट प्रो एंड नॉट प्रीमियर प्रो, एंड वो बहुत ही अनस्टेबल होता है. एनीवेज, मैं अपनी बात फिनिश कर दूं कि मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में लोग एप्पल प्रोडक्ट्स लेते हैं, देन देयर दिस हाफ कुक्ड वर्जन ऑफ दे आर नॉट यूजिंग इट टू फुल पोटेंशियल. आपने आईफोन लिया हुआ है लेकिन आप फिर भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, क्योंकि भाई फेस टाइम तो है नहीं किसी के पास, व्हाट्सएप भी आपने यूज करा. तो I think it's not a good return on investment on what you spend on iPhone. In that sense कि अगर आप इसको as a status symbol लेते हो, then yes, sure, go for it. लेकिन someone who is as tech savvy as me, I think for me, Apple is a terrible product in the current landscape of Pakistan. Any of the Apple, that's why I do not own any of the Apple products, and I use exclusively Android and Windows. लेकिन ये है कि people who I see using Apple products in Pakistan, they are not even using it at their full potential, because पूरा ecosystem unlocked ही नहीं है, पूरा ecosystem unlocked नहीं है, और पूरा अभी surrounding ही इस तरह की नहीं हुई है कि आप उसको fully use कर सको. That's true. लेकिन don't you think कि just a thought कि पाकिस्तान में अभी तक वो Apple stores क्यों नहीं आए? Because Pakistan, Apple doesn't see Pakistan as an emerging market. Do you agree or disagree on that? I agree. Because Apple products are immensely expensive. Why do you think Techno and Infinix and these phones are going so good, booming in Pakistan? No, but देखें, अगर हम बाहर से एप्पल स्टोर से आईफोन लेते हैं, पाकिस्तान से लेते हैं, तो प्राइस में फ़र्क होता है. Yes. और पाकिस्तान में भी ठीक है, आई नो कि वो एक सर्टन क्लास ही अफोर्ड करते हैं आईफोन फिर भी, लेकिन एप्पल स्टोर अगर आ जाए तो डोंट यू थिंक एक ज़्यादा वाइडर ऑडियंस के लिए अवेलेबल हो जाएगा? मनी टू बिल्ड एन एप्पल स्टोर, बिकॉज एप्पल स्टोर के फिर अपने वो एक तो उनकी बिल्डिंग आर ब्यूटीफुल, राइट, फिर उनके स्टाफ हैज टू बी ट्रेन्ड, तो उनके रनिंग एक्सपेंसेस इतने होंगे, इट वोंट जस्टिफाई द रेवेन्यू दैट दे वुड बी मेकिंग फ्रॉम. आल्सो द नंबर्स नॉट मेक सेंस राइट नाउ. जो आप पॉपुलेशन बोल रही हो ना कि उसको भी मिला लो, आप फुल एलीट को भी मिला लो, अपर मिडिल को भी मिला लो, मिडिल को भी मिला लो ना, तब भी किसी भी डेवलपिंग कंट्री में है एप्पल स्टोर. इंडिया में है क्या? इंडिया में है. इंडिया में तो iPhones are getting manufactured इंडिया में तो बहुत आगे. नहीं, बट इवन देन वहाँ पे बड़ी ये कंट्रोवर्सी है कि भाई मोस्ट ऑफ पीपल इन इंडिया still can't afford, तो वो भी वहाँ पे भी एक जो है ना ये sort of, but still at least numbers are making sense for Apple, that's why they're staying there. Right now Apple, the numbers in Pakistan wouldn't make sense for Apple because हमारी जो discrepancy है ना between our upper middle and elite class compared to our lower class, it's not even like 50-50. It's not even like this is 99-1. That's the ratio it is right now. That's why I think Pakistan में Apple is not coming anytime soon. In Pakistan, until we fix our economy for the good, the mobile brands like Techno, Infinix वगैरह, they will boom and they will take over the entire market, I think, because there will be a very small chunk in next, this is my prediction, don't quote me on this, but it's just prediction, in next 5 years I think the 70-80% of the market share will be in the hands of these local Pakistani mobile phones. Sure. Actually अभी कल टॉप ट्रेंड पाकिस्तान में कर रहा था, वो एक इन्फिनिक्स का फोन था शायद, पता नहीं समझ आपने कहाँ देखा था, Poa 2 के नाम से, I have no idea what company is this. The phone is called Poa. Yeah, जो 28,999 का है, that was trending. Yeah. तो मतलब वो ये काफी रिमार्केबल इनकी वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को एप्पल के से भी ऊपर वो ट्रेंड कर रहे हैं. ऑब्वियसली पाकिस्तान में अभी आप देखें, अगर उन्होंने 28,000 का फोन निकाला है तो 28,000 में तो आपको आईफोन ऐसे भी नहीं मिलता.
कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, एयरपोर्ट्स प्रो एयरपोर्ट से मिलते हैं हाँ. तो अब वो ये कि दे आर गेटिंग अ फ्लैगशिप फोन इन 28,000, सो पीपल आर वेरी हैप्पी कि यार हम लोग को ये दे दो. और आप अपनी ये दिस इज अ क्विक सर्वे यू कैन रन अराउंड योरसेल्फ, गो मीट 100 पीपल इन पाकिस्तान, सी हाउ मेनी ऑफ देम हैव टेक्नो और इन्फिनिक्स. और पाकिस्तान में ना वो चीज़ भी है, मुझे अभी पता चला कि आईफोन होता है लेकिन दैट्स अ फेक आईफोन, डमी आईफोन. उसके अंदर एंड्रॉइड में किस चीज़ का सेटअप होता है, होता है ये ना, होता है ना, ये होता है नहीं. और ये ना ये मेरे गांव में होता है, टोबा में होता है. और ना क्या कहते हैं, अब वहाँ पे ये होता है कि सेटअप उसके अंदर एंड्रॉइड का होगा या कोई और होगा, कोई विंडोज़ का. जो विंडोज़ फ़ोन नहीं आए थे एक बार, आई एम नॉट श्योर अभी भी हैं या नहीं, पहले पूरे पॉपुलर हुए थे. तो वो सेटअप होता है और बाहर से आईफोन और कैमरा भी बहुत शिटी होता है, लेकिन वो लगता प्रॉपर 12 प्रो, 3 कैमरे हैं, शेप उसके आईफोन वाली होती है. एक्चुअली आपका 100 अब मेरे किसी कज़न ने दिखाया था मेरे गाँव में. आई वाज जस्ट सो डिस्टर्ब टू सी इट. व्हाट द हेल, व्हाट इज दिस, गेट इट अवे फ्रॉम मी. तो ये अभी भी एक ट्रेंड है पाकिस्तान में. हाँ, दैट्स अबाउट इट. लेकिन ये कि Apple is not coming anytime soon. What are your take? Do you think Apple will come anytime soon? Like next 5 years? No, not really. Next 5 years? Yeah, you never know. If Pakistan grows, you never know. Of course, obviously. I'm saying na, it depends on Pakistani economy. Okay, because some people predict by 2030 Pakistan be one of the emerging markets as well. Especially because हमारा वो भी अपना state narrative भी change हो गया ना. Geopolitical economics तक आ गया. तो if that we follow through that और हमारी economy boom होती है, then Apple will be like, okay, emerging market, let's invest here. लेकिन वैसे Apple is considering Pakistan, क्योंकि I have a friend who works at the Apple store in Canada. तो he came specifically last year to survey the Lahore की market, क्योंकि वो यही था कि काफ़ी ज़्यादातर बात पहुँच गई थी कि they considering ओपनिंग और नॉट ओपनिंग. और यही था कि अगर कभी खुलेगी तो लाहौर में खुलेगी. हाँ, तो तब मुझे काफ़ी मैंने कहा वाओ शायद खुलने वाली है, लेकिन एटलीस्ट इट्स इन देयर कंसिडरेशन. वो तो ऑब्वियसली कीप कंसीडरिंग द न्यू मार्केट. स्पॉटिफाई कितने अरसे से कंसीडर कर रहा था यार. वी आर ऑल नो स्पॉटिफाई का पेज बन गया था पाकिस्तान का कोई 5 साल पहले. तो वो 5 साल से कम कंसीडर कर रहे थे और फिर उन्होंने इस साल आकर स्टार्ट किया. अच्छा, स्पीकिंग ऑफ थिंग्स दैट आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, लेट्स टॉक अबाउट मेट गाला. Oh yeah. Do you want to explain what Met Gala is? So Met Gala is basically a fundraising gala, और ये ना it's basically a costume party. So I didn't know that कि costume party होती है. मैं सोचती थी कि लोग क्या absurd obnoxious कपड़े पहन के आ रहे थे, but now it makes sense if it's a costume party. और उसका actually पहले नाम भी कुछ और था कि, और it's arranged by some museum of art. Let me check क्या exact क्या नाम है. Metropolitan Museum of Arts. Yeah, of arts. Costume. और it's arranged by Vogue. तो वो के एडिटर इन चीफ है, शी लाइक डायरेक्टली हेडिंग मेट गाला एवरी ईयर. सो इट्स इसमें सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं इनको इन्विटेशन जाती है, और फिर इसका जो टिकट होता है जो लाइक इफ यू नॉट अ सेलिब्रिटी यू कैन लाइक बाय अ टिकट, वो कोई अराउंड $30,000 होता है. $30,000 to $40,000 होता है. वाकई में? That's how they make money. That's how they make money. हाँ. और फिर and if you want to book a table for your friends or for whatever, you can also buy seats with like big celebrities. तो उसके ज़्यादा टिकट होता है. तो ये जो $120,000-$130,000 तक. तो कल मैंने जो न्यूज़ पढ़ी थी उसमें लिखा था जो लुइस हैमिल्टन है Formula 1 car racer, he bought a entire table for black designers जिनको जनरली रिकग्निशन नहीं मिलती. सो दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम. और जनरली ड्रेसेस का भी काफ़ी सीन होता है. अच्छा, तो हाँ, एंड देयर इज अ थीम एवरी ईयर. तो इस बार का थीम था अमेरिकन इंडिपेंडेंस. या so now a lot of the dresses they start making sense. Yeah, especially AOC वाले जो थे. AOC वाला tax वाला, yeah. So AOC is a very good person, yeah. I follow her a lot. I started following her when she started playing Among Us. Because that was the peak of her career. Where she got election से पहले election campaign के लिए था. उसके बाद I feel she's extremely idealistic. What do you mean by that? What I mean is that she's very loud, which is amazing. She highlights a lot of issues, but I feel like the real world doesn't work the way she wants it to work. True. But I guess that's also her strong suit. That bhai, you know, she wants कि वो actual जो ideal situation है उसके दिमाग में वो reality बन जाए. आपने वो वीडियो देखी है where she grills Mark Zuckerberg? Yes. But the way she was doing that, she was not letting him speak. Yes. आपने बात notice की वहाँ पर there was some psychological tricks going on there. Not just psychological tricks. I understand Mark's position in that. कि वो किस तरह yes or no answer. Because it's a very nuanced question था वो कि भाई how, and I understand उससे पहले तो अब तो खैर Facebook की policies change हो गई हैं, लेकिन उससे पहले I did support Facebook's policy कि भाई अगर वो आ जाते हैं तो फिर वो किस को सेंसर करें, किस को नहीं करें. So it was very a weird stance
from AOC's point, and I understand कि वो कितना reluctant था to answer that question because he can't make that call. But eventually he did make that call and he started banning political. And now they've changed political ads from normal ads. So like if you check someone's background history, you can see their ads and their political ads. So if you are running a political ad, you have to पहले से उनको बताना पड़ता है Facebook को क्या हम बात मेट गाला की कर रहे थे बिल्कुल डेविएट हो गए नहीं AOC से शुरू किया था I liked AOC dress tax the rich she has been working on taxing the rich वगैरह इस चीज़ पर भी she has been working out for like उस पर भी थोड़ी सी controversy आ गई थी कि they're like oh tax the rich but you bought a ticket so let me clarify she didn't buy the ticket she is in New York तो उसको invitation गया था and which is why she was there she didn't but who made the dress do you know No, I don't actually know who made that. But it was a normal dress, but it just said "tax the rich" on the back, like it was like hand painted or something like that. There was nothing so crazy. Like जैसे कुछ के Lil Nas X का ड्रेस देखा था आपने? नहीं, what आप was that? प्लीज सर्च करें यार. कौन सा? Lil Nas X का ड्रेस. That was my favorite dress. Lil Nas X Met Gala. He is very he's a expressive. Yeah, I don't think if that's the correct word. It's all golden. Oh my god. The pink one यार वैसे हम पाकिस्तानियों के लिए ये कॉन्सेप्ट कितना फॉरेन है ना हेड काला और इस तरह एक्चुअली हाँ कॉस्ट्यूम अब तक आज होता है यहाँ पे नहीं इट्स नॉट फॉरेन इट्स जस्ट कि ये थोड़ा सा वेस्टर्नाइज्ड है ठीक है हम अगर अब अपने कल्चर्स में इफ यू गो इनटू लोकल कल्चर्स यू विल रियलाइज कि हमारे एवरीडे कपड़े आर वेरी कलरफुल दे आर वेरी वाइब्रेंट एंड दे आर वेरी इट्स जस्ट कि हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया ठीक है दिस इज अ नॉर्मल इन अच्छा आई थिंक आप मोस्ट लोगों कपड़े देखो दे आर नॉट कलरफुल दे आर एग्जैजरेटिंग That's the difference. Our clothing is colorful, yes, but it's not exaggerating. Nobody wears exaggerating clothes. And when was the last time you saw someone wearing very exaggerating clothes? Every शादी ever. लेकिन शादी पर भी वो दुल्हन और बस वो दुल्हन और वो एक लहंगा होता है नहीं पूरा खानदान Yeah, everybody wears it. औरतें करती हैं मर्द नहीं करते हाँ ये yeah so women do it men don't because वो westernized हो गए लेकिन men should अच्छा ये मैंने अभी realize किया है कि अभी male fashion में चीज़ें आने शुरू हो गई there's colored कोटी पहनते हैं there's like limited होते हैं लेकिन but there is more क्या कहते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में ना backlash बहुत है actually there's a lot of stereotyping with fashion don't you agree especially for men the entire episode on Pindi Boys also जो हमने बनाई थी that started off as a Pindi street style वाली चीज़ जो street style पे हमने तो focus नहीं किया लेकिन वही चीज़ होती है ना if you go to Pindi you will see people wearing jeans के ऊपर patterns बने हुए होते हैं और ना shiny shirts होती हैं patterns वाली fully और हम लोग उनको पिंडू कहते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ठीक है अब वो मतलब वही वाला फैशन वो मतलब जब इस्तेमाल करके आते हैं या वो टॉरस करके आते हैं तो मतलब नो दे लुक डाउन अपॉन और दिस इज ऑर्गेनिक फैशन कि वो वेस्ट अपने वेस्टर्न ड्रेसेस और ईस्टर्न ड्रेसेस को मिक्स करें दिस इज देयर ओन क्रिएटिविटी अब टिकटॉक पे आप देखते हो इतना ज़्यादा कुछ लड़कों ने लंबे बाल भी रखे होते हैं और कुछ मेकअप भी किया होता है दैट डजंट मीन देयर गे और समथिंग ये जैसे फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन लेकिन मैं वही ना कि आई फील लाइक पाकिस्तानी सोसाइटी में अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है ये बहुत ज़्यादा हमारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं कि वुमेन शुड ड्रेस लाइक दैट अ मैन शुड ड्रेस लाइक दैट अब वही होता है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम श्योर कि व्हेन यू गाइस वर ग्रोइंग अप यू गाइस सॉ कि लड़कों ने अपना तब ध्यान नहीं रखना अपने हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखना ठीक है फैशन का तो क्या ही हाइजीन का ध्यान नहीं रखना फेस वॉश नहीं यूज़ करना शैम्पू नहीं यूज़ करना कंडीशनर नहीं यूज़ करना बिकॉज ये हमारी मर्दानगी को अफेक्ट कर रहा है थिंग्स लाइक दैट True. I think इन्होंने जो बहुत मजे का पॉइंट उठाया वो था कि टिकटॉक फैशन आई थिंक पाकिस्तान में टिकटॉक हैज एन एंटायरली डिफरेंट उनका एक अपना ही फैशन ये पता है मैंने चीज़ देखी थी लास्ट ईयर शायद टिकटॉक पर ना बहुत ट्रेंड करना शुरू हो गया था कोरियन स्ट्रीट स्टाइल और उससे वही तो बैगी पैंट्स और ये वो तो फिर लोग करना शुरू हो गया कि यार पाकिस्तान में तो कोई नहीं है ना मतलब देखो कोरिया का स्ट्रीट स्टाइल देखो एंड देन आई वाज लाइक नो वी लिटरली हैव सिमिलर स्ट्रीट स्टाइल और लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो हम बहुत बैकलैश देते हैं उन लोगों को और फिर क्लास डिवाइड भी है या इट्स अ क्लास थिंग ना क्योंकि हमारे जो अमीर लोग हैं दे वांट टू लुक लाइक द वेस्ट तो दे कैन अफोर्ड टू वेयर लाइक वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड्स I feel कि that's gradually changing because I was doing research for Gen Z aesthetics and I realized कि a lot of and I was also researching fashion ठीक है and I realized कि now what Gen Z are doing especially with Ajeeb Collective, if you're familiar with, they're trying to blend the two. So like Western hair, that's familiar to us, but at the same time, they're trying to incorporate Eastern elements. Right? Like there was this one jacket that I really like. उसका नाम क्या था? Fruit chart के नाम से था. It's beautiful. It's a denim jacket, but it has like very colorful pattern on top of it. Yeah, that's because कि अब 2020-2021 have been the year जिसमें colors का generally बहुत ज़्यादा trend आ गया. Like neon colors का, bright colors का. तो और ये चीज़ आप देखें ना कि लेकिन जो ब्राइट कलर वाली चीज़ थी ये
पाकिस्तान में एक स्पेसिफिक क्लास काफ़ी अरसे से कर रही है. Yes. हमें तो अब नजर आ रहे थ्रू टिकटॉक एंड लाइक थ्रू वीडियोस लाइक दैट, लेकिन काफ़ी अरसे हो रहा था. लेकिन अब ये क्योंकि अब लाइक बिग फैशन ब्रांड्स आर लाइक इनकरेजिंग दिस, बिग डिजाइनर्स आर इनकरेजिंग दिस, दे हैविंग अब सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, लाइक आई लुक्स होती हैं प्रॉपर, ठीक है. तो अब मतलब ये नॉर्मलाइज हो रहा है थोड़ा. Like new art is always started from the grassroots level. आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जा रहा होता है. That is the case with even in America. जब वो पिछले साल not 2019 में मेट गाला था, तो उनकी थीम थी कैंप. एंड कैंप वो जो उनकी जो ब्लैक क्वीयर कम्युनिटी होते हैं, that's where it comes from, right? तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जो है वो मेन स्ट्रीम होता जा रहा है. तो सेम इज द केस विद पाकिस्तान. तो आई फील दिस इज अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस थ्रू आउट. ये ऐसा ही होता है. फैशंस के जो फैड जो साइकिल्स है वो इस तरह आते जाते रहते हैं. अच्छा, तो आई थिंक बस आखिरी एक काफ़ी एक फेमस ट्रेंड है, वी शुड जस्ट हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन इट. क्या एग्जैक्टली ट्रेंड है? उर्दू में है कोई? इट्स अबाउट अ बिल जो सिंध में भी डिस्कस हो रहा है. इट्स एक्चुअली द बिल इज बीइंग डिस्कस्ड टू एक्चुअली cater to the forced conversions of young girls here. वहाँ पे इसके लिए होता है कि हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स को किडनैप करते हैं, उनसे शादी करते हैं और उनसे ना फिर लाइक पाकिस्तानी मर्दी मुसलमान उनकी शादी करते हैं, अपना फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं टू इस्लाम. तो इसको इस प्रॉब्लम को केटर करने के लिए बिल पास हुआ है, जिसमें पास नहीं हुआ, अभी बस डिस्कस हो रहा है. तो लेट्स सी होता है. यानी तो उसमें बेसिकली है कि अंडर 18 यू कैन नॉट कन्वर्ट योर रिलीजन. तो इसमें काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी है अभी. लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है क्योंकि पीपल आर लाइक कि इट शुड बी अ पर्सनल थिंग और वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है. तो व्हाट आर योर थॉट्स? तो इस वक्त जो इस पर बैकलैश आ रही है, क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है? क्या लोग इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं या बोले या इस बिल के लोग खिलाफ, मेजॉरिटी लोग खिलाफ बात कर रहे हैं? तो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं. तो बिकॉज़ आई थिंक दिस बिल इज वेरी क्लोज टू पीपल एंड नॉट जस्ट पीपल, माइन और एवरीवनस रिलीजियस सेंटिमेंट, क्योंकि कन्वर्जन इज अ थिंग दैट हैपेंस that we see happening. कभी कभी तो हम भी देखते हैं कि यार कन्वर्जन होगी, we see in the news. Wait, are you talking about forced conversion? No, I'm talking about forced. I'm talking about natural conversions. तो हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन होती हैं. तो जिन लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट इससे हर्ट हो रही है, ऑब्वियसली उनको ये लग रहा है कि दिस बिल might hinder actual conversion that might happen in those days, because you know in eastern Sindh there's a lot of Hindu community. So there could be natural conversions that might get hindered, because that's why there are people who are against this bill. But again, it's a tricky position to be in. वो वाली चीज़ होती है ना कि अगर आप मतलब एक फॉर वन गुड फॉर द पर्सनल लिबर्टी ऑफ वन पार्टी, जो अब वही के पर्सनल चीज़ होनी चाहिए, रिलीजियस सेंटिमेंट, आप एक उसके अगर इफ यू सपोर्टिंग दैट, उसके ऑल्टरनेटिवली एक बहुत एक क्रूअल चीज़ हो रही है विच इज़ लाइक फोर्स्ड कन्वर्जन्स. तो मतलब आई एम लाइक क्वाइट अनश्योर अबाउट इट राइट नाउ कि मेरा खुद का क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे. क्योंकि दिस इज़ अ वेरी ग्रेव इशू एंड द प्रॉब्लम इज़ कि ये इशू जो है ना, लाइक हमारे टीवी चैनल्स पे भी नहीं आता, ठीक है. और इतना और इट हैज़ बीन लाइक यू आर फ्रॉम कराची और लाइक अफीरा भी शी नोज अबाउट कराची, सिंध वगैरह. तो आप लोग ये बता रहे थे कि काफ़ी सालों से ये चीज़ हो रही है. एंड ऑनेस्टली आई रेड अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बिगिनिंग ऑफ 2021. ठीक है. और मुझे अब थोड़ा बहुत जरूरत है. अच्छा, आई फेल्ट लाइक दिस एन इशू जो अब शुरू हुआ है, ठीक है. तो मैं बस ये था कि एक नया मसला आ गया पाकिस्तान में, लेकिन ये बहुत ग्रेव इशू है. और लाइक जो सिंध के लोकल जो न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा रिपोर्ट होता है, लेकिन उतनी रीच नहीं होती इसकी. और अब मतलब यही कि इफ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट जो इतना ग्रेव इशू है बट इट नॉट बीइंग हाईलाइटेड इनफ, और अगर ये असेंबली में पहुँच गया, डिस्कस हो रहा है, तो मतलब इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ गुड थिंग, क्योंकि यू नो एटलीस्ट इसको कोई attention मिल रही है. I agree with that. So because the bill was introduced, so now people are talking about it, which is nice. I think bill in its current form, I think it's not right, to be honest, because आप religious sentiment side पे, इस्लाम को side पे करते हैं, तो आप देखें आप personal liberties आपकी भी affect, like the state is reaching into your personal liberties and it's sort of an invasion. So I like, even if you keep away the religion, तो from a liberal point of view अगर देखा जाए तो it's still a bad bill. I feel like इसकी थोड़ी सी modifications होनी चाहिए. I understand कि वो किस problem को address कर रहे हैं, and it again nobody's denying कि ये नहीं होता, ये होता है. It's a real issue. It's a real issue. It exists and it definitely needs to be addressed. But I don't know if this is the right way to do it. This is the right. I agree. मेरा बिल्कुल exactly ये point. I think the issue is real. The issue exists,
But the current bill in its current form is not the solution to it, because it would hurt a lot of people who are not a part of this forced conversion वगैरह. And I think a more mature solution is needed, where it directly like affects the people who are being affected by it. So I guess with that we should end our episode. Thank you so much, Sarma. Thank you so much, Heather. Thank you. See you tomorrow. Allah Hafiz.